Hello friends, welcome back once again on my YouTube channel Gyan Guru by Gaurav Gupta. Now friends, today we are going to study percentages and its applications. This will be part number 1 of this session. So that means जितने भी हम sessions conduct करेंगे percentages पे, so percentages entirely ये बहुत सारे parts में divided होगा. Okay, so this will not be a single lecture. ये एक single lecture नहीं होगा. I'll be teaching you in different sessions. I'll be covering up the entire percentages. अब ये जो सेशन है, ये जो टॉपिक है परसेंटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, दिस इज रेलेवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सीमैट का एग्जामिनेशन अभी आने वाला है इन अ फ्यू मंथ्स, 2-3 मंथ्स में. MHCET, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, सिविल सर्विसेज, CUET, IPMAT, SSC बैंक पीओ के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कोई भी एक स्टूडेंट है जो स्टैंडर्ड 7 में है अभी, 8th 9th 10th, and they will require aptitude classes later on. So what you can do is by attending these sessions आप अपना जो aptitude level है वो अभी से ही increase करना शुरू कर सकते हो, because aptitude is one of the most important things that will be useful in your lifetime. Okay, so let's quickly start with percentages and its applications. Now to start with basic calculations to deal with percentages. ओके, सो देर आर कन्वेंशनल वेज. बहुत सारे कन्वेंशनल वेज होते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स, उनमें टाइम सेव करने के लिए हम क्या क्या चीजें रिमेंबर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर परसेंटेजेस की जो कैलकुलेशंस हैं, इफ यू यूज द कन्वेंशनल टेक्निक्स यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, ऑल्सो every calculation is not that simple. हर calculation simple नहीं होती. So you need to learn some different techniques, alternate तरीके आने चाहिए इन calculations को deal करने के लिए, so that हम ये वाली जो calculations हैं इनको orally perform कर सके, mentally perform कर सके, हमें लिखने की जरूरत ना पड़े, because जितना हम ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा time waste होगा. So let's have a look at some basic ways of handling these calculations. Okay, so let's say I'll start with a very basic question. So let's say we have to calculate 20% of any number. Okay, 20% of 625. We have to calculate this. अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 एंड देन दे विल मल्टीप्लाई इट बाय 625. ये सब करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स हैंडल दिस कैलकुलेशन इन अ डिफरेंट मैनर. ओके, सो 20% of 625. I will consider this number separately, 625. Okay, now 100% of 625 will be the number itself. किसी भी नंबर का 100% कैलकुलेट करेंगे तो वही नंबर आएगा 625, राइट. नाउ इसका 10% क्या होगा. अब 10% कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 100 से 10 पे गए तो मैंने 10 से डिवाइड किया है, आई हैव डिवाइडेड इट बाय 10. सो 625 को 10 से डिवाइड कर दो, सो इट विल बिकम 62.5. सिमिलरली 1% कितना होगा इस वैल्यू का, इट विल बी 6.25. 0.1% will be 0.625 and so on, right? तो 100% अगर 625 है, 10% हो जाएगा 62.5, 1% will be 6.25. इस तरीके से हम ये वाली वैल्यूज लिख सकते हैं. नाउ अगर मुझे 10% पता है, सो आई कैन इजिली कैलकुलेट 20%. इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 10% अगर 62.5 है तो 20% क्या हो जाएगा, 62.5 का डबल. 30% will be triple, 40% will be 4 times and so on. Similarly 1% अगर आपको पता है तो 2%, 3%, 4% कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट. तो अब मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, 20% of 625. So orally in my mind I can calculate one thing, that 20% क्या होगा, 2 multiplied by 10%. ठीक है, मैं साथ साथ लिखता रहता हूं. So 2 multiplied by 10%, right? Now 10% of this number is 62.5 and आपको क्या करना है, बस इसको डबल करना है.
तो 62.5 का डबल कितना हो जाएगा, बस वो कैलकुलेट करना है, इट विल बिकम 125, राइट। अब ये जो टाइप की कैलकुलेशंस है ना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट टाइम सेव नहीं कर पाओगे। इफ यू एक्चुअली वांट टू सेव टाइम तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, जब भी इस टाइप की कैलकुलेशन आपके सामने आती है, सो यू मस्ट यूज दिस टेक्निक, देन ओनली यू विल बी सेव टाइम इन द लेटर स्टेजेस। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफिकल्ट। So let's say I want to calculate 23% of 180. अब जो हमारे एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उसमें मजे की बात ये होती है कि ऑप्शंस गिवन होते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसको हैंडल करते हैं, 23% ऑफ 180। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 23% को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा, 20% and 3%. I am writing all these things so that you will understand, but in the initial stages आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है, बट एक्चुअली जब आप ये फाइनली परफॉर्म कर रहे होगे कैलकुलेशंस, तो ये सब रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग विल हैपन इन योर माइंड। ओके, अब 20% ऑफ 180, सो 180 का 10% विल बी 18 and 20% will be 18 multiplied by 2, that is 36. Simple calculation. Then for 3%, I'll write 1%. So 1% of 180 will be 1.8. I'll multiply it by 3 and that will become 5.4. Okay. So 36 and 5.4 will now be added and my final answer will be 36 plus 5, that is 41.4. So 41.4 will be equal to 23% of 180. Okay. So likewise, what you have to do is, what you should do is, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एंड स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, 23% ऑफ 180 कैलकुलेट करना था, 23% को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 20 and 3%। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप से, and then we will move forward. Okay, so next example, let's say you will have to find out 62% of 410, right? 62% of 410. अब 62% को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, you will also realize this later. So 62% can be written as 50%, then 10% and then 2%. Okay, अब 50% किसी भी नंबर का क्या होगा, उसका हाफ। हाफ कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट बहुत इजी है। सो 410 का हाफ कितना होगा, 205। ओके, देन 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था अभी। सो 410 का 10% कितना होगा, 41, एंड देन 2%। सो 2% के लिए पहले 1% कैलकुलेट करेंगे, विच इज 4.1, and then multiplied by 2, that is 8.1, sorry 8.2. all right, so 4.1 multiplied by 2 will be 8.2. अब बस इन तीन नंबर्स को ऐड करना है, you just have to add these three numbers. So 205 plus 41 will be 246. Okay, slowly, 246 plus 8, that will be 254.2. So the final answer will be 254.2. all right, so slowly and gradually अगर practice करना शुरू करोगे, then you will be able to handle all these things properly. ठीक है, okay, now let's move on and look at the next thing, statements, handling with the statements in percentages. okay, so एक बहुत बड़े क्वेश्चन का बहुत छोटा सा लास्ट पार्ट होगा, what is A is what percentage of B is what percentage of A is more than B by what percentage, and so on. So बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं, बट लास्ट में जो पूछा हुआ है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ओके, हमें समझ में नहीं आता कि हमें न्यूमरेटर में क्या रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या रखना चाहिए, राइट। So to understand all those things, let us have a look at these statements in percentages. Okay, so let's say in any question you are given the value of A as 45 and the value of B as 60. ठीक है, A और B का वैल्यू पता है, we are good with calculations, but
वी आर अनेबल टू मेक द फाइनल एक्सप्रेशन कि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए. ओके, सो इफ द स्टेटमेंट इज ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंटेज है, राइट? सो दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए विद द वैल्यू ऑफ बी. ए का वैल्यू बी की वैल्यू से कंपेयर करना है. सो एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, a upon b multiplied by 100. a which is in numerator is compared with b. a is what percentage of b. so of b का मतलब क्या हुआ, हमें a को b से कंपेयर करना है. so expression will be a upon b multiplied by 100. all right, ठीक है. similarly b is what percentage of a. so b a का कितना परसेंटेज है, so of a will go in the denominator. so b should be compared with the value of a. so I'll write b upon a multiplied by 100. okay, now once you have obtained these expressions, then just by substituting the values you can find out your answer. वो बात की बात है, ठीक है. सो पहले ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगी वो समझ में आना चाहिए, देन फाइनल आंसर क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी आर गुड विद कैलकुलेशंस. सिमिलरली अनदर स्टेटमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ P is Q. नाउ दिस इज आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर. चीज वही है बट इट इज आस्क्ड इन अ डिफरेंट मैनर. व्हाट परसेंटेज ऑफ P is Q. So read it in a different manner. Q is what percentage of P. Okay, now you will understand. So of P है, so P से compare करना है, P will go in the denominator, Q will come in numerator and then multiplied by 100. once again अगर values पता है, values substitute करेंगे and answer calculate कर लेंगे, right? Okay, now next thing is difference between A and B. A is what percentage more than B. B is what percentage less than A, right? अब अगर ये स्टेटमेंट पूछी हुई है A is what percentage more than B, तो इतना तो समझ में आता ही है हमें कि A is more than B. A की वैल्यू B की वैल्यू से ज्यादा है. ओके, सो अगर मैं ये परसेंटेज हटा देता हूं, सो A is what more than B. A का वैल्यू B की वैल्यू से कितना ज्यादा है. That means they are talking about the difference of A and B, or specifically A minus B. A B से कितना ज्यादा है, तो A ज्यादा है B कम है, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है. सो A माइनस B ये न्यूमरेटर हो जाएगा. नाउ इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है टू फाइंड आउट द परसेंटेज, अगेन ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है. सो A is what percentage more than B. Like in the previous case of B, of A, of P ये given था, यहां पे क्या है than B. so A is what percentage more than B. इनका जो डिफरेंस है वो B की वैल्यू से कितना परसेंटेज है. ओके, so A minus B divided by 100, A minus B divided by B multiplied by 100, this will be the expression that will be made. Okay, similarly let's look at the second statement. B is what percentage less than A. स्टेटमेंट क्या बोल रही है, B is less than A. अब B कम है, A की वैल्यू ज्यादा है, अगेन आई हैव टू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन देम. सो डिफरेंस क्या होगा, सेम चीज A minus B, but this time I have to compare this difference with the value of A. So A will go in the denominator multiplied by 100 and ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड आंसर फाइंड आउट करो. ऑलराइट, फाइन, आई होप आई एम क्लियर. Okay, now let's go further and understand the next thing that will help you in like making your calculations even more quicker. Okay, so calculations के time पे अगर time save करना है, so you should be remembering a few things that is called percentage equivalents of fractions. अब percentage equivalents of fraction का मतलब क्या है ये समझते हैं, and फिर कितनी percentage equivalents of fractions याद रखने हैं ये भी समझेंगे. So first of all, percentage equivalent of fraction. So कोई भी एक fraction है उसको percentage में convert करना है, so उसका percentage equivalent क्या होगा. For example, 1 by 2. So 1 by 2 is a fraction. If I want to convert it in percentages, I will multiply it by 100. Okay, so it will become 50 percentage. So I can say that
1/2 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी 50%। ठीक है, पता होगा ये सबको। अगर मैं आपको बोलता हूं किसी भी चीज का 50% कैलकुलेट करना है, सो व्हाट विल यू डू? आप कोई कैलकुलेशन तो नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे? सीधा सीधा उसको हाफ कर दोगे। Okay, so you will not get into some complex calculations. You will just divide that number by 2 to calculate 50% of that number. Correct? Similarly, 1/3, 1/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 100 डिवाइडेड बाय 3, सबको पता है ये चीज 33.33%। ओके, सो there are some very commonly used fractions which can easily be converted in percentages, और हमें उनका वैल्यू याद है। 1/4 25%, 1/5 क्या ये वैल्यू याद है सबको? 20%। ओके, सो लाइकवाइज किस लिमिट तक, किस नंबर तक हमें परसेंटेज इक्विवेलेंस याद होने चाहिए? अब इसका कोई आंसर नहीं है, जितने ज्यादा याद करोगे उतना बेटर है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन विच एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, you can remember percentage equivalence of fractions. Okay, but in my view you should be remembering percentage equivalence for the first 10 numbers. If you are in like elementary classes like 7th 8th 9th में हो, so 1/10 तक के percentage equivalence remember कर सकते हो। But if you are preparing for any aptitude level and entrance examinations like CUET or MBA entrance examination में SNAP, नारसी मुंजी, banking examinations, bank PO, SSC, okay, if you are preparing for these, then you will have to increase this number up to 20। okay, and if you want to do wonders, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़े डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड का लेवल बहुत हाई है, देन यू मस्ट रिमेंबर परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस अप टिल 30। ओके, 30 तक याद रखने हैं। नाउ आई विल स्पेंड क्विक 5 मिनट्स, 5 मिनट इस पे स्पेंड करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि इन चीजों को याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने तो यहाँ पे आपको 30 तक का टेबल दे दिया। ओके, I have given you a table in which percentage equivalents up till 1/30 are mentioned, but how to remember them? Okay, अब अगर इन सबको individually याद करोगे ना, it will take lot of time for you to remember and it will take very less time for you to forget. Okay, अगर individually याद करोगे, नहीं कर सकते, बहुत difficult है। Okay, so what you can do is you can make a technique, you can make a devise a way of remembering these things। बचपन में ऐसे किया होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें पहले साइन कॉस टैन के फॉर्मूले याद नहीं होते थे। ओके, देन साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह की वैल्यूज याद नहीं होती थी कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमने बचपन में बनाई थी एंड आज तक यूज होती है। ओके, सो व्हाई नॉट devise something funny, okay, something that we can remember for a longer period of time, right? Okay, so let's do that. Let's spend next 5 minutes in understanding this। okay, now first of all, very logical thing, बहुत logical है, some easy percentage equivalence of fractions, easy वाले देखते हैं। मैं मार्क कर रहा हूं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ओके, मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों मार्क किए हैं? 1/2 का याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। सो नाउ इफ यू रिमेंबर 1/2, सो 1/2 से 1/4 पे जाना है तो हाफ कर दो। सो 50 का हाफ कितना हो गया? 25। सो 1/4 इज 25%। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए। ओके, वेट, आई विल जस्ट क्विकली डू दिस करेक्शन। So this should not be the square, it should be percentage। okay, all right, okay, so 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, okay, you can relate these। तो जो भी easy है उनको हम पहले एलिमिनेट करते हैं, देन जिनको एक्चुअल में डिफिकल्टी होती है याद रखने में, वो वाले हम बाद में देखेंगे। सो 1/2 का हाफ 1/4, सो 50 का हाफ 25। देन 1/4 का फर्दर हाफ इज 1/8, सो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। सो हाफ ऑफ 25 इज 12.5।
Then 1 by 8 का half is 1 by 16. So 12.5 का half is 6.25. So you can relate these four fractions with one another and you don't have to remember them individually. Right? Done? Okay. So these four are taken care of. Then let's move on and let's see in the similar manner which all fractions can be remembered. Okay. Now if you know 1 by 3, 1 by 3 is 33.33. Half of 1 by 3 is 1 by 6. It can be remembered. Then 1 by 6 का half कितना होता है? 1 by 12. Then 1 by 12 का half कितना होता है? 1 by 24. So these can be easily taken care of once again. Done? Okay. Now moving ahead, 1 by 5. 1 by 5, easy, 20 percentage. So half of that, 1 by 10, then 1 by 20, you can remember easily. Clear? Okay. So whatever fractions right now I am marking, I'm sure that nobody will have any problem in remembering these. Problem kahan pe aati hai? 1 by 7, 1 by 9, 1 by 13, 1 by 17. In numbers में problem आती है and I will give you a wonderful way, एक मस्त टेक्निक दूंगा इन सबको याद रखने के लिए. कुछ कुछ को याद रखने के लिए टेक्निक है मेरे पास, कुछ कुछ को याद रखने के लिए टेक्निक नहीं है. जिसके लिए भी है हम उसके लिए देखेंगे. ठीक है. देन 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 ये सब हो गया. 1 by 7 चेक करते हैं. ठीक है. So 1 by 7, I'll take you to the next page. Now 1 by 7 मैंने कैसे याद किया? 1 by 7, 7 का डबल कितना होता है? 14. ओके. एंड देन 14 का डबल कितना होता है? 28. ओके. सो 1 by 7 is 14.28. सिंपल एज दैट. राइट? आई रिपीट, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28. डन विद दिस. राइट? अब 1 by 7 अगर याद हो गया है, सो 1 by 7 के साथ यू कैन रिमेंबर 1 by 14 and 1 by 28 just by taking half of these values. So 1 by 7 का half 1 by 14 होता है, तो 14.28. अब सेकेंड डेसिमल प्लेस को फॉरगो कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड डेसिमल प्लेस अगर मैच नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट डेसिमल प्लेस मैच होना चाहिए. राइट? सो 1 by 7 अगर मैं बोल रहा हूं 14.28, सो 1 by 14 इसका हाफ हो जाएगा 7.14. ओके. and 1 by 28 इसका फर्दर हाफ हो जाएगा. ओके. सो इट विल बी 3.57. राइट? अगेन मैं बोल रहा हूं फर्स्ट डेसिमल प्लेस मैच होना चाहिए. सेकंड डेसिमल प्लेस में ऊपर नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. राइट? सो 1 by 7, 1 by 14, 1 by 28 आर टेकन केयर ऑफ. राइट? आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट आर 1 by 9 and 1 by 11. अब इनको दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं. नाउ 1 by 9 में 11 का यूसेज है, 1 by 11 में 9 का यूसेज है. सो 1 by 9 अगर मैं बोलता हूं इट्स 11.11%. ओके. 1 by 9 इज 11.11%. सो 1 by 11 कितना हो जाएगा? 9.09%. ओके. सो इन दोनों को एक साथ याद किया जा सकता है. 1 by 9 is 11.11%. 1 by 11 is 9.09%. All right. So 1 by 9 is done. 1 by 11 is done. Now next comes 1 by 13. Okay. 1 by 13 बहुत tricky है. So 1 by 13. Now अगर आपको पता हो 13 बहुत जगहों पे अनलकी नंबर माना जाता है. 13 is considered as unlucky number. ओके. 13 नंबर से बहुत सारी हॉरर मूवीज भी बनी है. ओके. सो ये नंबर अनलकी अज्यूम किया जाता है. इफ यू गो इन लॉट ऑफ कंट्रीज आपको 13th नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा, 13th नंबर रूम नहीं मिलेगा, 13th नंबर स्ट्रीट नहीं मिलेगी. ओके. सो 13 इज कंसिडर्ड एज अनलकी नंबर. अब 13 अनलकी नंबर होता है एंड कैन बी से दैट लकी नंबर क्या होता है? लकी नंबर 7. सबके लिए नहीं, इन जनरल 7 को लकी नंबर बोलते हैं. फाइन. सो 13 is unlucky, 7 is lucky. So unlucky once, lucky twice. 7.7. 1 by 13 is 7.7. Okay. The exact value is 7.69, but 7.7 भी अगर याद करोगे it is very near to 7.69. Right?
सो अगर थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि 7.7 है तो 7.69 भी लेटर स्टेजेस पे याद हो जाएगी, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 1/17. Now 1/17, I would ask you the approximate value of 1/17. 1/17 का approximate value कितना होगा? अब 1/17 कैलकुलेट कैसे करेंगे? 100 divided by 17. So ये कितना आएगा? It will be 5 point something. ठीक है? Now 5 point something. अब प्रॉब्लम ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ना, इसी को याद करने में होती है. Now something, this decimal के बाद वाला part is 17 multiplied by 5. 17 into 5 is 85. Okay, so 5.85 approximate value of 1/17. यहाँ पे 5.88 है, मैंने बोला था second decimal place you can forego. Okay, now let's move on to the next one. Next one. मैंने बीच में 2-3 छोड़ दिए हैं, 1/15, 1/9, 1/18. So 1/15 1/5 से पहुंच सकते हो. ओके, सो 1/15 1/5 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो. ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 का 1/3 कितना होता है? 6.67. ऐसे ही 1/9 को हाफ कर दिया तो 1/18 मिल जाएगा. ठीक है, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट वन. 1/19, 1/20, 1/21 टुगेदर. Now 1/20 कैलकुलेट करना सिंपल है, it is 5%. Okay, 1/20 is 5%. Now 1/19 का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर कम किया तो वैल्यू इंक्रीज होगा, एंड 1/21 का वैल्यू 5 से छोटा होगा. सिंपल. सो 1/19 विल बी 5 point something and 1/21 should be 4 point something. अब अगेन प्रॉब्लम कहां आती है? ये समथिंग, ये जो कैलकुलेशन है डेसिमल के बाद वाली, उसको याद करने में दिक्कत आती है. ओके, नाउ इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. 1/20 इज 5%. 5 का डबल कितना होता है? सॉरी, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 5 स्क्वायर इज 25, राइट? सो क्या करना है आपको? 0.25 will be added to 5, so this will become 5.25, and 0.25 will be subtracted from 5, it will become 4.75. I'll repeat, 1/20 कितना होता है? 5%. Okay, 5 का स्क्वायर 25, so 0.25 add कर दिया, 0.25 subtract कर दिया, you will get 1/19 and 1/21. स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, याद करने का तरीका है. ठीक है? ओके, सो 1/19 5.26, मैंने क्या बोला? 5.25, सेकेंड डेसिमल प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/21 मैंने क्या बोला? 4.75, एक्चुअली इट इज 4.76. okay, so get near to these values, then you will be able to remember the exact values. Okay, now next value 1/22. 1/22 can be reached from 1/11, तो हम छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, अब ये जो मैंने अभी टेक्निक बताई, ये टेक्निक 1/24, 1/25, 1/26 पे भी अप्लाई हो सकती है. ओके, 1/25 कितना होता है? 4%. 4 का स्क्वायर इज 16, so 0.16 will be added, so this will become 4.16, and 0.16 will be subtracted, this will become 3.84. okay, so 1/24, 1/26 can be remembered in this way. All right, clear? Done. Now two more values, 1/23 and 1/29. Now this method is amazing. 1/23 and 1/29. ठीक है? Now I'm sure that students who have studied a little bit of mathematics, they must know Pythagoras theorem. Pythagoras theorem सुना होगा? हाँ, Pythagoras theorem क्या होता था? एक right angled triangle में अप्लाई करते थे. ओके, राइट? एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट भी सुना होगा. पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता था? any three numbers that will satisfy Pythagoras theorem, है ना? ठीक है, सो ये सुना हुआ है. सो इफ आई टॉक अबाउट पाइथागोरन ट्रिपलेट, सबसे पहली ट्रिपलेट माइंड में क्या आती है? सबसे पहली ट्रिपलेट सोचो, सबसे पहली पाइथागोरन ट्रिपलेट, तीन नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हो, 3, 4, 5. 3 square plus 4 square is equal to 5 square.
ठीक है. Now just remember these three numbers. 3, 4 and 5 को याद रखो. Okay. 1/23 and 1/29 में यही तीन डिजिट्स यूज हो रहे हैं. Now 1/23 अप्रोक्सीमेटली होता है 4 point something, 1/29 अप्रोक्सीमेटली होता है 3 point something. ओके, सो अगर 3, 4, 5 में से मैंने 4 को हटा दिया तो क्या बचा 3 और 5. सो 1/23 is 4.35 and 1/29 is 3.45. Okay, let's check them out. 4.35 is 1/23 and 3.45 is 1/29. All right, fine. So with this method, like I'll not call it a trick, but individually agar dekhoge, then now you will be able to probably remember these fractions for a longer period of time. All right. So this is about percentage equivalence of fractions. I hope you would have liked this session. Okay, so if you have liked this session, please do press the like button, comment, share and subscribe. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, सो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो एंड आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू. Share this video with your friends and do subscribe my channel so that you will keep on getting the notification of all the upcoming sessions. This was the first session on percentages. Very basic things were taught in this session. In the next session, I'll be teaching you percentage change, percentage increase or decrease, successive percentage change. So all these shortcut techniques will be taught to you in the next session. Till then, keep watching and keep learning. All the very best. Bye-bye.